My name is Junaid Irfan, and I will be teaching you guys freelancing and basically Fiverr, Upwork, and how you can start your freelancing career. Or सबसे पहले, before we start, we are going to take a look at what are the overviews of freelancing as a career option. तो बेसिकली अगर मैं हम इसको इस तरह देखें कि जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे तो आप बेसिकली अपना फाइवर अपवर्क को आप कैसे एक फुल टाइम कैरियर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड, व्हाट आर द बैरियर्स यू हैव टू ओवरकम, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। सबसे पहले, बिफोर आई शो यू how valid Fiverr and Upwork can be as your career option, I'll show you my profile and then you can take a look and have an idea of how you can proceed और आपका टाइम जो आप इन्वेस्ट करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो कितना वैलिड हो सकता है। So I'll show you my profile here. This is my profile जो कि मैं नवंबर 2018 से मैं रन कर रहा हूँ और मेरी मेन नीश जो है वो मोशन ग्राफिक्स है, जिसके अंदर मैं यूट्यूब इंट्रोज, आउट्रोज, लोगो एनिमेशन, जिसके अंदर मैं डिज़ाइन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज जो हैं वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। Over the 4 years, what I have gained is around 999 reviews, all right, or with the rating of 4.9. And I have had the pleasure of working with big brands like TEDx, Post, Set in Motion. The exposure that I have gained for all the years is insane. जो कि मैं कभी भी किसी लोकली मार्केट के अंदर किसी कंपनी के अंदर काम करते हुए वो कभी भी नहीं गेन कर सकता। द थिंग अबाउट फ्रीलांसिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू रियलाइज इज कि जब आप फ्रीलांसिंग के अंदर जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आफ्टर यू हैव मेंटेन्ड, आपने अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर लिया है, यू आर गोइंग ग्रेट, उसके बाद बेसिकली बिग कंपनीज विल स्टार्ट टू स्टेप इन. Companies will start contacting you, companies will want your services if they are good enough. और उसके बाद बेसिकली आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका बहुत ही एक हाई लेवल के ऊपर आपका जनरेट होने लग जाता है। नॉट टू मेंशन कि जो आपकी स्किल्स जो आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर परस्यू कर रहे होते हैं वो स्किल्स भी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती हैं। बिकॉज राइट नाउ व्हेन यू आर वर्किंग इन अ फ्रीलांस मार्केट, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिजल्ट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, बी इट इन एनी फील्ड। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज हो रहा होता है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही आपका रेडी हो रहा होता है। तो आई थिंक जो गिव अवेज है फ्रीलांसिंग के, दे आर अमेजिंग। और एज अ individual working in Pakistan, I think it's a great opportunity. The opportunities are insane because you are getting paid in dollars. आपका जो projects की आप prices जो आप determine करते हैं, they are going to be in dollars. तो this is going to be very beneficial for you. If we don't even take the monetary aspect in consideration, then you can take a look that portfolio like I show you here that I have worked on, it's just insane. I can take this portfolio to any company. I can take this to any company in my local market, even internationally, and they will recognize it. और उसके बाद basically आपको you can land a job, you can work professionally in this career. So freelancing in 2023, I believe, is a very viable option as a career. So इस course के अंदर I will be teaching you guys how you can get here for all the journey I've been through, so that all the mistakes I made, you don't have to go through it. जो भी मैंने गलतियां की इस सारे प्रोसेस में, आपको मेरे एक्सपीरियंस से वो गलतियां ना फेस करनी पड़े। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया, आई विल शेयर देम विद यू एंड यू विल गेट देयर इंशाल्लाह. So let's stay tuned and I will be continuing this in the next video.